Hello friends, welcome to ProTalent and this is Nitin Parmar bringing to you October month legal news for your CLAT. Remember, we are picking up some important legal news for your CLAT related things. देखिए दोस्तों, हम आपके लिए जो क्वेश्चंस बना के लाते हैं और जो लीगल न्यूज हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है, वी आर नॉट पिकिंग अप unnecessary legal news like some important cases कि फॉर एग्जाम्पल जैसे चेन्नई हाई कोर्ट में या कोई पर्टिकुलर हाई कोर्ट में कोई पर्टिकुलर केस आया और उस केस के साथ कनेक्टेड कोई न्यूज़, क्योंकि क्लैट में या एआईएलटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ऐसे क्वेश्चंस जो बिगर पब्लिक डोमेन को अफेक्ट करें और उसके रिलेटेड आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं कि फलाना डिगना वर्सेस फलाना डिगना कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ और उसमें से कोई आउटपुट आया. वैसे लीगल केसेस नहीं आते हैं दोस्तों. आप अगर देख सकते हैं 2019, 18, 17 के पेपर उठा के देखिए और ऐसे केसेस नहीं आते हैं. ठीक है कि भाई सविता बाई वर्सेस फलाना डिगना केस में क्या हुआ. Nobody is asking that question. Yes, ठीक है ना. सो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं सेडिशन लॉ कौन सा आर्टिकल के मुताबिक आता है, आईपीसी में कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई डिसीजन दिया उसके मुताबिक क्या हुआ. यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंश्योर दैट यू पिक अप राइट इंफॉर्मेशन. अननेसेसरी गलत लीगल न्यूज देखने का मतलब नहीं है. आई हैव सीन कपल ऑफ यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ लॉ. ओके, उनके लिए काम की है. ठीक है, वो लाइव लॉ में से पढ़ते हैं, बार एंड बेंच में से पढ़ते हैं, अच्छी बात है. सो लाइव लॉ या बार एंड बेंच में से पढ़ना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग because those are very good newspapers, but that is meant for some other group of students. Okay, आप लोगों के लिए when you are a CLAT aspirant, ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए कुछ अलग जगहों पे, and that is what we try to cover for you. Let me start today to discuss about very important part. आपने देखा होगा बिहार कोर्ट ने they have directed filing of an FIR against 49 eminent persons who signed an open letter to PM Modi expressing their concerns over mob lynching. Okay, many experts, they have opined that this is against the true meaning of the law. Okay, so here we have to understand what is sedition. Sedition दिया जाता है सेक्शन 124A of IPC इंडियन पिनल कोड के तहत. Sedition ये डिफाइन किया जाता है that whoever by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, ये काम का वर्ड है, hatred or contempt, or excites or attempt to excites disaffection. क्या क्रिएट होना चाहिए? Disaffection towards government established by law shall be punished with imprisonment. This is sedition. ओके, आपके शब्दों के द्वारा, आपके कोई विजिबल साइन के द्वारा, या आपके कोई रिटन वर्ड्स या और कोई तरीके से आप गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अगेंस्ट में कोई डिसअफेक्शन क्रिएट करते हो तो सेडिशन हो गया, है ना. एक तरीके से इसको बोलते हैं राजद्वेष. ठीक है, राजद्वेष का आरोप होना चाहिए. बहुत सारी जगह पे सेडिशन को बोलते हैं राजद्रोह. ठीक है, राजद्रोह, मेरा मानना है दिस इज अ बेटर वर्ड कंपेयर टू राजद्रोह. ओके, नाउ व्हाट इज दिस राजद्वेष. ठीक है, आपने देखा होगा राजद्वेष का आरोप या राजद्रोह का आरोप इन अ मूवी कॉल्ड बाहुबली 2. उसके अंदर बाहुबली को राजद्रोह के आरोप में निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो देवसेना थी वो पूरे भरे दरबार में माहिष्मती साम्राज्य के खिलाफ, उनके जो प्रोसेसेस थे उनके खिलाफ वो कुछ बोल रही थी और उसकी वजह से उनको निकाल दिया गया. ठीक है, नाउ दैट इज कॉल्ड राजद्रोह. ओके, सो दिस इज आईपीसी 124. दिस इज पुराना लॉ. ब्रिटिशरों के जमाने से गांधी जी को सेडिशन लॉ के द्वारा बहुत बार अंदर डाला गया था, जेल में डाला गया था. सेडिशन बिल इस तरीके से काम करता है, फ्री प्रेस,
फ्री स्पीच, ऑनेस्ट ओपिनियन उसको पकड़ लेता है, उसको निगल जाता है। एक राक्षस है, एक अजगर है जो इसको निगल जाता है, और ये हमारी डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, सो ये जो बिहार में हुआ, दैट इज डेफिनेटली नॉट अप्रोप्रिएट। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन टुडेज टाइम द गवर्नमेंट एंड द पीपल लाइक यू एंड मी आर फेसिंग? So the citizens in a democracy have a right to raise questions, debate, disagree. Now there are no specific laws. It is under article number 19. This becomes our fundamental right. ठीक है, हमारे fundamental right के मुताबिक ये हमें करना जरूरी है. When we do this, we may possibly cross line. ठीक है, so thereby government wants us to stop because there are reasonable restrictions available, and in that they've introduced the section 124A of IPC. Law enforcement agencies, they generally fail to recognize the fact that sedition can't be applied on the instances of criticism of the government or a political functionary. जनरली उस जगह पे नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कोई बोल दे कि ये सरकार, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई से बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक सेंस, okay, thereby lot of recession activities, or you can say job opportunities are not getting created. If I say so, this should not turn out to be a sedition because this is criticism of the government or some honest opinion of someone. ठीक है, so thereby the law enforcement agencies have to be very clear about this idea that it has to incite the violence. If some speech incite violence, ठीक है, then it is sedition. As per National Crime Records Bureau NCRB, जिसके बारे में मैं आज वापस बात करने वाला, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आया, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला डिस्पाइट द राइज इन सेडिशन केसेस, convictions barely happens. So this is reasonably okay. Trigger happy approach is invoking the sedition cases, shows that government over the years have been sending a strong message to its own people to obey or to be ready to face these consequences. That means अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपके ऊपर केस लगा देंगे. This is what government has been telling. So what are the ways to overcome these problems? ठीक है, the solution is सबसे पहले उसको bailable offense बना देना चाहिए. These are the suggestions of some critics. Okay, thereby the impact would be reduced. Offenses should be also made non-cognizable so that there has to be a proper judicial check. And in the case of hate speech, it is important to raise the burden of proof on those who claim that their sentiments are hurt, then accept them at the face value. अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आर सेइंग हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, तो उनको प्रूव करना है कि क्यों हर्ट हुए, ये भी इनको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए. फाइनली कोर्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दोस हु ब्रिंग मैलिशियस कंप्लेंट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में बोला था. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन in strong criticism of the government and incitement of violence. If someone is bringing strong criticism, that does not necessarily mean that is a sedition. Coming to a next issue, that in the recent order of Election Commission of India, they have reduced disqualification period of Sikkim's CM, and that is, it is not in consonance with the need to deal with the issue of corruption with the iron hand. I'm sure all of you are aware that corruption is a big problem. In a very famous case called Subramaniam Swami versus Union of India, Supreme Court has clearly mentioned that corruption is an enemy of the nation and held that tracking down corrupt public servant and punishing such person is a necessary mandate of Prevention of Corruption Act 1988. ठीक है, पर अभी इलेक्शन कमीशन ने एक मजेदार सा अपना जजमेंट दिया जहां पे उन्होंने ये बोला दैट दे आर रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इलेक्टोरल कंटेस्ट ऑफ सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग to 1.5 years after its conviction in 1988 case. 1988 एक्ट के तहत 2010 में उनको कन्विक्ट किया गया था और उनको एक लंबी सजा हुई थी, बट दे रिड्यूस्ड दिस सजा into 1.5 years. So after the amendment in 2003, the conviction in anti-corruption law is around 6-year disqualification.
कितने साल का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 6 साल का. However, under section 11 of RPA, that is Representation of People's Act 1951, EC has the power to remove or reduce disqualification attached to a conviction. Thus, EC has a power, और उन्होंने उस पावर का यूज करके तमांग साहब को एलिजिबल कर दिया इन द बाई इलेक्शन सो दैट ही कैन रिटेन हिज पोस्ट ऑफ अ सीएम. बट दिस इज डेफिनेटली अ बैड आइडिया. ये जो उन्होंने पावर अपने हाथ में लिया और इस तरीके से अगर उन्होंने यूज किया, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग. इस पावर इन 1951 एक्ट हैज बीन यूज्ड ओनली रेयरली एंड सेल्डम इन केस इन्वॉल्विंग कन्विक्शन ऑफ करप्शन. ठीक है, so this is really in a very rare case. So to ensure the purity of election process and to provide support to the people, such civil disability, that means removing a person to be part of civil activity, that means being contesting election. ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है. The order is definitely morally wrong, legally right. ठीक है, sets a dangerous precedent that they may increase क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, सो जब सरकार बोलती है कि हम क्रिमिनल्स को पार्टिसिपेट नहीं करना देना चाहते, पर वही सरकार उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है, दिस इज रियली बैड आइडिया. इट इज नॉट द सेकंड पनिशमेंट इन द क्रिमिनल सेंस. रिमेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट अ सेकंड punishment, it is and part and parcel of the punishment. Election Commission's decision also goes against a series of recent legislative and judicial measures primarily to strengthen legal framework of our country. और वो पूरे उसके अगेंस्ट में जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द प्रोटेक्शन गिवन to sitting legislator from immediate disqualification was also removed. ठीक है, so that means ये तरीके के अगर केसेस आ रहे हैं फिर भी इस तरीके का जजमेंट देना by election commission is not morally right. Okay, so election commission is being partisan in this particular front. Coming to very important issue, recently there has been criticism for some groups for possible reintroduction of Citizenship Amendment Bill. आपको पता होगा विंटर सेशन चालू हो चुका है और इस विंटर सेशन में गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग दिस Citizenship Amendment Bill. This bill was originally introduced in 1955 and primarily it was there to protect the refugees from neighboring countries that are living in India on well-founded fear of persecution by their majority community. उनके देश में उनको प्रॉब्लम है and therefore they have come here and thereby we develop the Citizenship Act. Okay, now what are the provisions of this amendment bill? It will allow illegal migrants from minority communities. ध्यान से देखिएगा, it will allow minority communities from countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan to be eligible of this Indian citizenship. That means who will be allowed? Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians. They will be allowed. Okay, so आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान majority people are Muslim, उन लोगों को अलाउ नहीं करेंगे. The bill aim to grant citizenship to people from minority communities after 6 years of stay in India if they do not possess proper document. Under the present law, the requirement is 12 years of stay. This has been reduced. The bill also provides that registration of overseas citizen of India cardholders may be cancelled if they violate any law. Okay, so ये amendment उन्होंने डाला है. So पहले समझते हैं ये बिल क्या है. Citizenship Act 1955, the act defined an illegal immigrant as a person who enters India without a valid passport or stays in a country after the expiry of visa term. The act also prohibits illegal migrants from acquiring Indian citizenship. ठीक है, और वहां पे प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन उन्होंने डिफाइन किया है. ठीक है, सो दिस इज अ सिटीजनशिप. आपको पता होगा इंडिया में सिटीजनशिप 5 तरीके से मिलती है. ठीक है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय एक्वायरिंग एनी territory. So here the process of naturalization is defined. This is 12 months. Okay, person must have resided in India for 12 months immediately preceding the application
एंड पर्सन मस्ट बी रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक है, फॉर 11 आउट ऑफ 14 ईयर्स प्रीसीडिंग द 12 मंथ्स पीरियड. इस 12 मंथ को ये लोग रिड्यूस करने वाले हैं 6 मंथ्स. ओके, दिस इज एन अमेंडमेंट. अब आपको समझना पड़ेगा, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट आया था जिसका नाम था आसाम अकॉर्ड 1985, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल आसाम गण संग्राम परिषद हैज एंडेड देयर मास मूवमेंट एंड दे डिफाइन अ पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहां पे उन्होंने बोला था दैट विल हैव एन एग्रीमेंट एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो लोग भी आएंगे उनको हम इलीगल माइग्रेंट बोलेंगे. इस डेट के पहले जो लोग भी आए उनको हम लीगल माइग्रेंट बोलेंगे. और उन्होंने एक एक्ट बनाया था उस समय पे, फॉरेनर्स एक्ट 1946, एंड देन दे डेवलप फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964. ठीक है, तो कुछ लोग हैं ये अमेंडमेंट बिल के फेवर में है, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है. सो पीपल हु आर इन फेवर, व्हाट इज देयर आर्ग्यूमेंट? They said there are lakhs of minority communities who have entered India after religious persecution in countries like Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Majorly, Hindus were persecuted because of the religious reasons. So these minority communities do not possess any valid document primarily to receive various benefits. So thereby, in absence of any valid documents to the refugees, they find it very difficult to get citizenship or long-term visa, and thereby this amendment is necessary. What is the criticism? It says it is against article number 14. It talks about equality. Okay, every person is equal in front of a law, while this particular part is focusing only on the religion. Yes, thereby people are saying that this is not right. Okay, the bill will also significantly affect northeastern region, ठीक है, because they are getting into a lot of trouble with respect to illegal migration. ठीक है, डेमोग्राफिक थ्रेट हो रही है इंडिजिनस कम्युनिटीज को, क्योंकि इंडिजिनस कम्युनिटीज आर नॉट गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, सो पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दिस इशू. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड इज गिविंग कंसेशन based only on the religion is against the tenets of secularism, and therefore it is very important to re-examine the entire issue one more time. Okay, chaliye, great. Let's now move forward to questions. Legal knowledge quiz connected to current affair. ठीक है, this is one of its kind in the country. ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हम यूनिक कंसेप्ट लेकर आए आपके लिए, ये हम काफी समय से चला रहे हैं, बट आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग. ठीक है, और मेरा मानना है दैट विद सच काइंड ऑफ सपोर्ट यू विल बी स्टेप्स अहेड देन लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मेक श्योर दैट यू गेट सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम अस. ये रहा आपके सामने पहला सवाल, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू लीगल एस्पेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO. सो पहला स्टेटमेंट बोलता है WIPO इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. आपको बताना है इन सब स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही है. WIPO is a specialized agency of UN. WIPO's headquarters is Stockholm. What intellectual property indicators released by WIPO covers patent, trademark, industrial design, plant variety production, geographical indications. And as per WIPO 2019, Asia accounts for more than 2/3 of intellectual property applications. Here, it is very important for all of you to note that WIPO refers to intellectual property. Now, what is intellectual property? Something related to patents, trademark, copyright, industrial designs, geographical indication. ये सब आता है intellectual property के अंदर. ठीक है, तो ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात है. So, what is the answer to this? WIPO is a specialized agency of UN. Yes, definitely. इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में नहीं, it is in जिनीवा, ओके, स्विट्जरलैंड में. ओके, WIPO indicators released by WIPO covers patent, trademark. Yes, this is right. And as per WIPO, Asia accounts for more than 2/3. Definitely, चाइना ने इसको ओवरकम कर लिया पूरा का पूरा. So answer would be 1, 3, 4. ठीक है, some more information is provided here. ओके, चाइना रैंक्स फर्स्ट इन ऑल कैटेगरीज. नंबर 2 पे आता है USA, उसके बाद आता है जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन पेटेंट ऑफिस. ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट WIPO. प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा, इसको PDF लीजिएगा और वो आपको बड़ा फायदा करेगा.
Coming to next part called National Crime Records Bureau recently released Annual Crimes in India Report 2017. Very important report they have published. Okay, so उस रिपोर्ट के साथ क्या क्या स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है. NCRB works under Ministry of Defense. NCRB is responsible for collecting and analyzing crime data as defined in IPC. I think that has to be right. ठीक है, so ये तो पक्का right है. As per the report, maximum number of offenses against state were reported from Haryana. This is sedition. आज ही हमने बात करी थी sedition. ठीक है, so ये हो सकता है बिल्कुल. As per the report, maximum number of crimes against women are reported from Haryana. Okay, so answer होना चाहिए 2 and 3. So this is second and third are right. ठीक है, this is not coming under Ministry of Defense. Okay, so answer हो जाएगा 2 and 3. Okay, so क्या क्या information है. NCRB 2017 में रिपोर्ट आया उनका. It is after a delay of 2 years. 50 lakh cognizable crimes were registered across country in 2017, showing 3.6% rise over 2016. ठीक है, while 61.2% cases were registered under IPC, 38.8% share was of special and local law cases. Okay, so इंडिया के क्राइम सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है. ठीक है, 15 states and union territories have reported annual decline in crime. This is good. While crime capital is Delhi, that is Delhi is India's crime capital. This is huge. वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होता है. ठीक है, दिल्ली रिकॉर्डेड 40.4% शेयर ऑफ टोटल IPC क्राइम रजिस्टर्ड इन 19 सिटीज. ठीक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अलग अलग क्राइम के बारे में बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, followed by Maharashtra and then West Bengal. ठीक है, Delhi remain at the top in terms of city, followed by Mumbai. So UP is number 1 at crime against women. Offenses against state में Haryana is at the top. Okay, so ये ध्यान रखिएगा. Maximum number of sedition cases basically were from Assam. Anti-national elements, ठीक है, were categorized. ठीक है, they were committed by left-wing extremists. ठीक है, LWE 652, followed by northeast insurgents and then terrorist people, that is jihadi and other elements. So these are the kind of numbers came. मिसलिनियस के बारे में बात करें तो फेक न्यूज या फॉल न्यूज में नंबर 1 आया मध्य प्रदेश. ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश एंड केरला. राइटिंग के अंदर बिहार इज हाईएस्ट, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश. साइबर क्राइम हैज इंक्रीज्ड some around 56% increase. This is very important. And there are reports that leaves out data under mob lynching. उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन आई नहीं है. ठीक है, and this is a National Crimes Bureau. This is an Indian government agency coming under Ministry of Home Affairs. This is what this National Crime Bureau is there. Okay, आगे बढ़ते हैं. 6th schedule of Constitution is applicable to which of the following state? ठीक है, ये तो पक्का आना चाहिए क्योंकि इसके बारे में आजकल बातें हो रही है. 6th schedule is applicable to Assam and Meghalaya. Okay, so this is a complete information about 6th schedule. Please go through that. This PDF is given primarily for the downloading purpose. आप ProTalentDigital.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, consider the following statements about National Commission for Protection of Child Right, NCPCR. ठीक है, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट. कौन से स्टेटमेंट सही है? इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दैट इज कमिंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? आंसर इज only one. It's a statutory body and it is not coming under social justice department. ठीक है, so recently Karnataka State Commission for Protection Child Rights wants Department of Primary and Secondary Education to ban schools from assigning homework to the students in the lower primary school. ठीक है, तो वो उन्होंने बोला था 1 से 5 स्टैंडर्ड के बच्चों को कोई तरीके का होमवर्क होना नहीं चाहिए. ठीक है, सो उस ये आता है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन पुट्टू स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस, आपको बताना इन सभी 3 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट NGO which were substantially financed by appropriate government fall within the ambit of public authority. ठीक है, under RTI. So जो NGO है,
ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड करी जाती है वो आरटीआई में आनी चाहिए, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट बोला। नंबर 2, द टॉप कोर्ट हेल्ड दैट सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज पोर्शन which can be both direct as well as indirect. It is not necessary that major portion or more than 50%, आप ये 50% का फॉर्मूला नहीं ले सकते, मेजोरिटी की बात है। And the various concession such as allocation of land, accommodation, bungalow in the national and state capital, tax exemption against their income under the section 13A of income tax, ठीक है, free airtime on television, radio can easily satisfy prerequisite of this section 2H of RTI, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है। अब इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? The answer is 2 and 3, ठीक है। First is not right, okay, it was not mentioned in Puttu Swami versus State of India case, so you will have to tell me under which case this has been, you can say, justified, okay। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ऐसा कुछ चीज इन क्लैट, ठीक है, बट थोड़ी सी अगर स्टडी करी होगी, आपने रिसर्च किया होगा, तो आपको ये सब शब्द आसानी से पकड़ में आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, ठीक है। देयर इज अ स्पेशल सजेशन व्हिच इज कमिंग एंड टेलिंग दैट देयर हैज टू बी आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल। रिटायर्ड मेंबर of armed forces who have held the rank of major general or equivalent or above are eligible to be appointed as a chairman of this tribunal, and it does not have power of adjudication with respect to appointments, commission, enrollment or condition of services of the armed forces, ठीक है। Which of these statements are right? The statements which are right are none of this, okay। So Justice Rajendra Menon of Delhi High Court, ठीक है, he was a former CJI of Delhi High Court, so there is a suggestion that Armed Forces Tribunal has to be developed, and it has been accepted, and now Justice Rajendra Menon has been recommended as a chairperson of Armed Forces Tribunal, okay। Some more information is provided here, छोटी information है, please go through that, this is very important। Consider the following statement regarding International Civil Aviation Organization। Statement बोला गया, it is a specialized agency of UN and it is responsible for the, this is number 2, it is responsible for the development of principles and techniques of international air navigation, ICO के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। So after Pakistan denied the use of its airspace for PM Modi's flight to Saudi Arabia, ठीक है, India has dragged this matter to ICAO, उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, ठीक है। सो ये आईसीओ के बारे में पूरी जानकारी आपके लिए, ओके। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई एम श्योर, और इफ यू आर एंजॉइंग दिस मॉड्यूल, अगर आपको ये पसंद आया है कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ डिड यू लाइक दिस, ठीक है। आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट लीगल इश्यूज, विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू ऑल दोस, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।